This is too much TMI. Am I telling you all way too much? This is my dormitory gym. Why am I forgetting English exit? फिर से मैं तुतला रहा. So I'll just walk out for I don't know 30 minutes maybe. Next question is, are Koreans friendly? What is this noise? ये डॉर्मेट्री पूरी खाली है, पता है. यहाँ लोग नहीं है क्योंकि समर वेकेशन में सब अपने अपने देश गए हैं, अच्छी अच्छी जगहों पे घूमने गए हैं. और what was the question? The question was, are Koreans friendly? Honestly, I will not say friendly. I will say they are very formally nice. A good answer. Really good answer. Shabash. So, hope so nobody sees me and they are like, this girl crazy, she's speaking to the camera. तुम वहाँ देख सकते हो क्या? I'm not speaking to anybody. Over there. I'm speaking to thin air. So, yeah, that's what a vlogging looks like. So, what was I saying? I said they are formally nice. So what I mean by formally is that मैंने ये observe किया है, Koreans भले ही उन्हें इंसान से बात करना है या ना बात करना, they will respond formally. Even if they are not interested to talk to you, they will just respond formally to make you feel bad. I realized that, see, when I came here in my lab, they were all Koreans. मेरा जो foreigner classmate है वो बहुत late आया, थोड़ा late. So till then, I was surrounded by Koreans only, and I had to go to them conference, जो मैं तुमने videos में दिखाया होगा. So मेरे जो expenses and all, cards and all, वो सब ready नहीं थे. So they were the ones who helped me. They were really nice. Means उनको instruction मिला था professor से कि they are supposed to help me. Oh, you can see me there. Yeah, my booty. Even if they don't approach you, but they will talk first. If you approach them first and you ask help, they will never say no. They will say yes. Even if you are not able to communicate, they will say, once upon a time, it's once in a while. किसने पढ़ाई मेरे को English? मैं इससे मिला सकता हूँ. So, anyways, so once, what happened was, I was somewhere and I needed water. I didn't know where the water was. So मेरे लैबमेट ने बोला ऐसा लाइक आगे जो वॉशरूम के सामने ही फिल्टर है. तो मैं गया, मेरे को नहीं दिखा वो. So there was one guy who was standing there phone. वो लड़कियों के वॉशरूम के सामने क्यों रखा था, I don't know. I asked him very politely. वो ऐसे हो गया. First of all, he got scared. I'm like, I was not going to hit you, dude. And I was like, I didn't even raise my hand. I was like, excuse me. So I did like that. Still he got scared. And then he went back. Then I asked him, and then he came in front. And then he said, here. As I pointed out, I was like, thank you. Anyway. So yeah. I don't know what they're scared about foreigners. हम उनको खा जाएंगे ऐसे दिखते हैं क्या? So yeah, but we look different from them. So I think so they get a little intimidated by us. Which university provides tuition fee waiver? This is done. What was the question? Which university waives off your tuition fee? So it is not the university that waives off, it is the scholarship that university has. So my university, that time when I was taking admission, they had one scholarship for graduate students only that is to waive off their tuition fees if you win the scholarship. So it's not the university, it's the university scholarship. तो तुम लोग को मैंने लास्ट वीडियो में बताया है, try to visit यूनिवर्सिटी का जो वेबसाइट होता है, डेस्कटॉप, ओपन इट ऑन डेस्कटॉप. डोंट ट्राई टू डू ऑल दिस स्टफ ऑन फोन. मेरे को नहीं लगता मैं अगर फोन से सब कुछ करने की कोशिश करूँ तो मुझसे होता. आई नो बाइंग अ लैपटॉप इज वेरी एक्सपेंसिव, बट sometimes I feel like if I didn't have a laptop, I would never write my resume. Because imagine on Word, on the phone, you're typing your resume again and again. It would go crazy. Yeah, if you can, do buy it. But on desktop, or you can type it on. जब तक मेरा laptop नहीं है, I was in my library का laptop PC use करता था मैं. So on the website there is like international students के लिए जो facilities है उसमें, and there is a scholarship column.
और you can just check their हर semester से पहले scholarship का notice आता है website पे. So there will be like graduate student scholarship, undergraduate student scholarship. तो तुम्हें उसमें देखना है कि क्या चल रहा है, 50% off चल रहा है, 60% off चल रहा है, 100% off चल रहा है. मेरे केस में it was my international office that informed me and my professor informed me. I had no idea about this scholarship, honestly. I only know about this research scholarship that my professor would give. Ow. So yeah, that was about. Try to keep an eye. I know it is difficult to keep an eye on the website all the time, but at least you join all the international groups, Kakao Talks and all. I did join my university Kakao Talk, जहाँ वो लोग scholarship के बारे में सब कुछ बता रहे थे. I know, randomly I joined that Kakao ID. कितना मुश्किल था पता है Kakao ID बनाना, क्योंकि वो इंडियन नंबर से बन ही नहीं रहा था बिल्कुल. I like एक हफ्ते बाद अरे यार नहीं करते हैं, but एक हफ्ते बाद it got accepted. It has some उसके अंदर एक टाइम पीरियड होता है जिसमें वो लोग so try to join all the IDs. Even they have WhatsApp group nowadays. मेरे टाइम क्या लास्ट ईयर इट वाज Kakao ID. So join all this group, even Facebook groups they have. Facebook का मैंने उतना नहीं किया. Even Instagram they have, even Google pages they have. Email the international office about all this culture. They will inform क्योंकि उनका काम है स्टूडेंट्स को लाना. वो मना नहीं करेंगे अगर तुम एडमिशन लेना चाहते हो तो. यूनिवर्सिटी को मुनाफा होता है स्कॉलरशिप देने का. इट्स नॉट दैट कि उनके पास पैसे ज्यादा पड़े इसलिए वो दे रहा है. नहीं. So what was the next question? Did I answer it properly? Where is the paper? And any problem that you faced coming to Korea? इतनी प्रॉब्लम है कि तुम लोग को बताएगा तो तुम लोग रोने लग जाओगे. There was like an emotional roller coaster that I went through when I was coming to Korea. बहुत सारे problems थे, but अब तुम लोग को मैं कौन सा बताऊं वो बताओ तुम लोग. Okay, I might tell you in future videos. थोड़ा extra TMI. ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है. मैं बहुत बकबक करता. That's why I wanted to do a live क्योंकि मैं बहुत बकबक करता तो ये लाइव के लिए ठीक है. ये वीडियो बाद में मेरे को एडिट करने में मेरी जान जाती है. How much is the spice? I give up on my English. किसने सिखाया तेरे को इंग्लिश? हाँ, किसने सिखाया तेरे को इंग्लिश? Oh, this will distract you, all right. Focus here. How much is the spice? फिर से stipend and how I utilize it. How much is the spice? I cannot curse, right? I feel all my subscribers are very young. I cannot curse. I can pretend like I'm such a good girl who doesn't curse at all. You don't want to listen to me curse. Yeah. How much is my stipend? I've told you in my first video. Stop asking me how much is the money. नजर लग जाएगी मेरे पैसे को. पहले ही वो मेरे हाथ में नहीं आता है. जो भी आता है अकाउंट से ऐसा आता है, ऐसा उड़ जाता है. So I'll tell you all might know my stipend in my first ever video that I made on my YouTube channel has how much I've spent. I've told that in the video. So what it get utilized in? So my tuition fee gets waived off, but I need to pay for my dormitory, which is almost half of my stipend. जितना है उसका half. So अभी half बचा है. उसमें से I pay for my dormitory and then I pay for my health insurance, which is around 75,000 won. 3,000 रुपया. Yeah, I couldn't finish answering all the questions क्योंकि वहाँ जिम में अचानक से एक आचम्मा आ गई. मतलब वो यहाँ की स्टाफ है. She also works out. Let me just rest for some time. This is my favorite place now. I just hide from everywhere after coming here. What is the question? Part-time job in Korea. Honestly, कोरिया में दिखाया जाता है कि बहुत आसान है जॉब, पार्ट टाइम जॉब है ना मिलना, बट एज अ फॉरेनर इट इज वेरी डिफिकल्ट. बिकॉज मेरे रूममेट बहुत टाइम से फाइंड आउट कर रहे हैं जॉब्स अपॉर्चुनिटीज, बट वेरी डिफिकल्ट. टाइम फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है क्योंकि हम फुल टाइम ग्रेजुएट स्टूडेंट्स और अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं. हमारी क्लासेस कभी भी होते हैं, लाइक इवन 7 बजे शाम क्लासेस हो सकता है. सो इट्स नॉट रियली रिकमेंडेबल.
बट अगर तुम स्कॉलरशिप स्टूडेंट है तो कोई जरूरत नहीं, बट तुम अपने खर्चे पे आ रहे हो तो आ सकता है, लेकिन द मेन क्राइटेरिया विल बी आर यू एबल टू स्पीक कोरियन, क्योंकि तुम्हें जॉब करने से तुम्हें कोरियन कस्टमर्स के साथ डील करना होगा, अनलेस एंड अंटिल यू आर फ्रॉम यूनिवर्सिटी जो पूरी इंटरनेशनल है और सारे इंटरनेशनल बच्चे, यू कैन गेट इजीली जॉब्स ऑन कैंपस। कैंपस के अंदर कैफेटेरिया ये होता है, रेस्टोरेंट्स होते हैं एंड कन्वीनियंस स्टोर्स होते हैं, सो देयर यू कैन गेट जॉब्स। बट आई थिंक तुम्हें कम्युनिकेट करने के लिए कोरियन आना चाहिए। पार्ट टाइम जॉब्स डिपेंड्स अपॉन ऑल दिस क्राइटेरियाज, बट इट्स नॉट इजी टू फाइंड, टाइम फ्लेक्सिबिलिटी डिफिकल्ट है, और यहाँ कोरिया में सेमेस्टर सिर्फ 4 महीने के होते हैं, सो यू डोंट रियली हैव टाइम टू स्टडी। 4 महीना मतलब एक सेमेस्टर स्टार्ट होते हैं सेकंड महीने में, बाय द एंड ऑफ द सेकंड मंथ यू हैव अ मिड टर्म एग्जाम, और वो खत्म होते ही तुम्हारा नेक्स्ट फाइनल एग्जाम होगा। लाइक बाय द एंड ऑफ फोर्थ मंथ ये सेमेस्टर इज ओवर, एग्जाम्स का रिजल्ट भी दिखा दिया, सो इट इज वेरी फास्ट। अदर देन दैट द ऑप्शन इज ऑफ 2 मंथ्स हॉलीडे जो अभी चल रहा है, मैंने जुलाई खत्म हो गया मेरा 1 मंथ का वेकेशन खत्म हो गया, सो अगस्त इज अनदर मंथ आई हैव वेकेशन, सितंबर से मेरी क्लासेस स्टार्ट है, सो अभी राइट नाउ यू कैन वर्क पार्ट टाइम जॉब, बट क्योंकि इस टाइम में कोई बच्चा होता ही नहीं, सब अपने अपने चीजों के लिए अपने घर चले जाते हैं, सो आई एम नॉट श्योर हाउ मेनी शॉप्स आर ओपन फॉर यू टू वर्क एज पार्ट टाइम जॉब, क्योंकि मेरे रूममेट को तो नहीं मिला, इट वाज वेरी डिफिकल्ट, सो शी डिड नॉट गेट अ पार्ट टाइम जॉब। Are you a fan of any K-pop group? मैं हर जगह ग्रुप जो गाना अच्छा लगता है वो सुनता हूँ। Is life in Korea tough? It's not tough if you have your things right financially and जो भी तुम्हारी जो भी ये होती है सिक्योरिटी कि तुम सब खुद ब खुद मेंटेन कर रहे हो तो you're fine. मोस्ट प्रोबेबली सबसे पहले प्रॉब्लम होती है हेल्थ एंड फाइनेंस, so as long as you're sustaining that you should be fine. बट जो स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स की मनी पे आ रहे हैं, अब्रॉड पढ़ने आते हैं, मेरे को इमेजिन भी नहीं करने होता है कि लाइक हाउ डू दे डील विद इट एवरी डे। So just for the hype of studying abroad, don't take big loans and come here. Take a good university also which is promising you to give you something in return, and स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज हर यूनिवर्सिटी से है। जब मैं अपने यूनिवर्सिटी तक अप्लाई करा था, मैं इकलौता इंडियन था अपनी यूनिवर्सिटी में, सो देयर आर अपॉर्चुनिटीज, पीपल डोंट फाइंड इट। Do the exams are complicated? यहाँ की पढ़ाई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, माइंड इज मैथ मेजर। द प्रॉब्लम इज कम्युनिकेशन मैटर्स, क्योंकि इंडिया में हम 15 साल पढ़े हैं, 15 साल हो जाते हैं, I finished my degree there. The teachers know how, you know the education system, you know how what type of questions are coming, you know how the system is. मैं जब फर्स्ट टाइम यहाँ आया था, मेरे को मिड टर्म क्या होता है वो भी नहीं पता। I was like, what is midterm exams? क्योंकि इंडिया में मिड टर्म एग्जाम्स नहीं होते, देयर जस्ट सम स्मॉल टेस्ट that they give like 10 marks, 15, 25 marks, something. Yeah, midterm exam is literally 50% of your final exam. And your final exam is just 50%, 50%. So I didn't know what was midterm. So मैं तो prepare होके भी नहीं गया था, my professor was like, you had no idea. I was like, I had no idea. So it's not difficult, it is difficult to adjust. अभी इस सेमेस्टर मेरा बहुत खतरनाक गया है, मेरे मार्क्स उसमें बहुत बुरे आए हैं, बट सिंस आई एम अ मास्टर स्टूडेंट द कोर्स वर्क रियली डजंट रियली मैटर, व्हाट मैटर्स इज द रिसर्च, because my degree is research oriented, master's here is research oriented, that's what matters, but it's like an additional thing, coursework and all. So exams you have to study, but तुम्हें थोड़ा सा टाइम लगेगा to find out how actually things work here, क्योंकि मेरे को बहुत टाइम लगा। I was like, every time there was a test, I was like, how is this going to happen? And the expected presentations and all, I was like, math कौन present करता है? So that kind of things are there. I didn't get used to it yet, but I'm trying my best. अभी next semester पता नहीं कैसे जाएगा, ये semester तो बहुत खतरनाक गया है। Next is, what is my 12th standard stream? I'm from a science stream. Yeah, I did my 12th grade in science, and then I did my bachelor's in maths. I'm doing a master's in maths. Yeah. Sounds very easy, right? I don't know how I graduated with that. I might really look very nerd to you all, right? I'm very smart something. तुम लोग को एक दिन में पढ़ते हुए दिखाएगा अपने आप को. You will know how smart I am. Sometimes it is naturally, sometimes I really struggle. And that struggle is different from what we struggled in India. Here it is like, it's completely new. The struggle is, चाहते क्या ये लोग? क्या चाहते हैं? Like what do they want?
That's not very understanding. Like मैं दो हफ्ते से report लेकर आ, but every time I get a feedback on the report, I'm like, what does he want? Every time the feedback is like contradicting the last one. So I'm like, I don't know. I'm a little tired. I need to go to the grocery shop to buy something, but मेरे अंदर energy नहीं है बिल्कुल भी. This video is going to be so long for me to edit. I don't know how to edit. I struggle so much. Oh.